Good morning everyone. My name is Sheetal and I am an analyst. Today we will discuss about the quality control department. Basically the quality control department is responsible for testing of a material like active pharmaceutical ingredient, excipient and another kind of water testing, another kind of testing of bulk material and another kind of testing like SF, semi-finished products and stability. Basically quality control department is responsible for testing. Okay, then we will discuss about different kind of department in our quality control laboratories. So basically first is a raw material department. Raw material department is responsible for testing of raw material like active raw material included two parts, like first is active pharmaceutical ingredient and second is your excipient. Okay, we will do the testing according to our monograph. If the we will sampling firstly raw material, we will do a sampling as per our warehouse purchase department according to the reference. We will okay, firstly we have a sampling kit. We go where we will go to the warehouse to collect our samples as per our STP amount of a sample. Okay, then they will make a intimation of that material. That the intimation involves the quantity of material, reference, name of product, batch number and another kind of information about the product. Okay, then we will get a planning from to check a raw material from the upper department. Then upper department, then we will start a testing of a raw material. Okay, as per the monograph, firstly we will do a description of a product. We will identify the product if the product is colorless, check it out it is colorless or not, or amorphous, crystalline, another kind of, there is a different kind of description from that vary from a product to product. Okay, then we will do identification we will do either it from a IR, either it from a UV. IR stands for infrared spectroscopy and UV stands for ultraviolet spectroscopy. Yeah, another kind like HPLC, we will also identify the products from a HPLC. HPLC stands for a high performance liquid chromatography, that we will identify the chromatograms. And if we will do testing in a IR for identification, then we studied about molecular bonds. They form a peaks, and that we check compare with the standard and check the correspondence between the standard and the test. Okay, then identification we will do sulfated ash, LOD, water content basically we will do water content from Carl Fisher titrator. So we identify it. Then LOD, ash, sulfated ash and another kind of test according to our monograph. We will do a testing, then we will approve a material. Then the material gets approved, then the production department makes a batch from that product. Okay, then we will discuss about a water department. Water department is very important department. If the pharmaceutical department, if the pharmaceutical company have a parental preparation, water department play a very important role. So basically the water department contain, if the person doing water testing, there is a basically 5 kind of waters prepared in pharmaceutical industries. First is raw water. Raw water is in a form of bulk. ठीक है, bulk water if we identify as a tap water, that we called a raw water. Okay, then we will discuss about a treated water. Raw water get treats from a sodium hypochlorite solution, then it form a treated water. Sodium hypochlorite basically to reduce the pH and conductivity and reduce the chloride content. So then it passes through a multi columns, then it goes through a RO water. RO water is basically pre form of purified water. Then it goes to a ion exchanger, then it form a purified water. Then it goes to a multi column that have a the water boils at 100 degrees Celsius at continuity, and then we form a WFI. WFI basically hot in nature, so the WF play a very important role. So the testing of water involve a description, pH, conductivity and chloride test, sulfate test and heavy metal test. There are different kind of tests involved in water testing.
Okay, then we will discuss about a packing material. Packing material is a testing for a leaflet, cartons. If the primary packing, secondary packing, and tertiary packing. These are three kind of packing. Okay, primary packing is that kind of packing which have a direct contact with the product. Secondary is like a कार्टन एंड अगर ट्रेशरी की बात करते हैं तो आपका आ गया लीफलेट, जो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं जो मटेरियल के, पैकिंग का मटेरियल आपका, उसको बोलते हैं प्राइमरी। देन सेकेंडरी कार्टन हो गया, थर्ड आपका आ गया लीफलेट। ठीक है, इनकी टेस्टिंग करते हैं लाइक कार्टन की स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि वो ब्रेक तो नहीं हो रहा है, लाइक आपका उसका डायमीटर चेक करते हैं, लेंथ चेक करते हैं। ओके, देन उसका मतलब जो आपके कार्टन्स होते हैं वो 2x2 में काट के उसका वेट चेक करते हैं। फिर एक होता है टैबलेट ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ अपरेटस होता है, उसमें उसके चेक करते हैं कि कितने उसमें प्रेशर में वो टूट रही है। ठीक है, फिर टूट रहा है आपका कार्टन, वो हो गया। आपका फॉइल होगी, जैसे एल्युमिनियम फॉइल होती है, पीवीसी की फॉइल होती है, उसकी टेस्टिंग होती है। आपकी जो ग्लास वाइल है उसमें आपका एक टेस्ट होता है ग्लास ट्रांसमिटेंस टेस्ट, वो हम करते हैं बाई यूवी, उसकी लिमिट होती है 10% का क्राइटेरिया होता है उसमें। ठीक है, वो करते हैं। देन आपका आगे हम डिस्कस करते हैं बल्क प्रोडक्ट के बारे में। बल्क प्रोडक्ट आपका बनता है जब आपका रॉ मटेरियल अप्रूव होने के बाद आप इंटीमेट करते हैं प्रोडक्शन को, देन आपका बल्क प्रोडक्ट बनता है। बल्क प्रोडक्ट वो होगा जो एसएफ से पहले बना। ठीक है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसमें आपका बेसिकली होता है डिस्क्रिप्शन होती है, पीएच होती है आपकी, और एसए लगता है, SARS अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ वी विल डू। Okay, if the plant is parenteral, the weight per ml is very important for identify the density। आपका कोई मटेरियल है वो कितना गाढ़ा है, डेंसिटी चेक करने के लिए होता है वो। सो पहले बल्क प्रोडक्ट बनता है, उसमें हम ऐसे लगाते हैं बाई HPLC, बाई UV या बाई अनदर काइंड ऑफ टाइट्रेशन। सो वी विल डू। देन अनदर डिपार्टमेंट इज इन प्रोसेस डिपार्टमेंट। In process department is responsible for SF products, semi-finish. We will testing like a container volume. It's a pre-form of a finished product. Then we will do a testing like a description, pH identification and solubility and आपका हो गया SARS or another kind of test as per the monograph. Then last is your finished product. We will do the finished product testing as per the monograph. It involve all kind of testing as per the monograph. Okay, as such we will discuss about a stability department. Stability is a two kind of department. Okay, first is your ACC or other is LT, accelerated studies or long term stabilities। ठीक है, तो उसमें आपका क्या प्रोडक्ट है, उसमें कुछ स्पेसिफाइड टेस्ट करने होते हैं कि आप चेक करते हैं कि प्रोडक्ट आपका टेम्परेचर के साथ कितना डिग्रेड कर रहा है। जो आपकी स्टेबिलिटी है उसमें आप डिग्रेडेशन रेट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका उसमें मेन मैटर करता है आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन तो नहीं चेंज हो रही है, या पीएच उसकी आउट ऑफ रेंज तो नहीं जा रही है, या आपका ऐसे अगर आपकी लिमिट है 90 से 110 तो 120 तो नहीं जा रहा है, 130 तो नहीं जा रहा है, ये कम तो नहीं हो रहा है उसका पोटेंसी ऐसे, तो वो हम उसमें स्पेसिफाइड ही टेस्ट किए जाते हैं स्टेबिलिटी में। देन उसके बाद आपका आ गया GLP बेसिकली GLP इज़ अ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस and implement of SOP STPs। SOP is a standard operating procedure basically for any instrument, how to handle, how to do a work, how to calibrate, how to use, that involve how to precautions, which the precaution we will follow for the if any we will do any handling of equipment. So and as well as responsible for STPs, OOS, deviations and other kind of things we will do in a GLP. Thank you, have a nice day.